start. The principal issue raised in this public interest litigation relates to the alleged malfunctioning of the Vigilance Bureau Punjab regarding investigation and registration of FIRs, especially with reference to guidelines dated 6 March 2000 issued by the Vigilance Bureau staff. The core prayer in this petition under Article 226 is for directions to the learned trial courts to stay the proceedings in four FIRs bearing the following particulars and consequently for necessary directions summoning the entire record of the said four cases from the trial courts where they are pending to enable this court to examine the alleged illegalities committed by the Vigilance Bureau Punjab. Stop. The case in short is that the state government in the Vigilance Bureau has issued guidelines dated 6 March 2000 for streamlining the vigilance machinery in the state of Punjab. Stop. These guidelines issued by the Vigilance Bureau have been exhaustively considered by a division bench of this court in Civil Writ Petition 9256 of 2002 titled Ashok Chaudhary versus State of Punjab and others by the judgment dated 15th May 2006. Stop. In this case, the constitutionality of the circular dated 6 March 2000 was challenged. Stop. On a threadbare examination of the circular, the division bench opined as follows. Stop. The challenge to the circular would be valid if the same can be held to restrict the duties cast on station house officers under Chapter 12, especially under Section 154 of the Code. Stop. There can be no manner of doubt that the Code has been enacted by the Parliament in exercise of powers conferred on it under Article 245 of the Constitution of India and List 3 entry number 2 of the 7th schedule of the Constitution of India. Stop. There is also no doubt that list 3 is a list in relation to which both the center and the state can legislate. Stop. It would be open to the state legislature to modify any provision relating to criminal laws, and this amendment would operate within the respective jurisdiction of the state concerned. Stop. It is not denied before us that the circular has no legislative sanction and had been issued only by the state government exercising powers under Article 166 of the Constitution of India. Stop. In view of this, it can in no manner restrict the obligation conferred on station house officers of respective police stations to abide by the mandate of Section
154 of the code stop. In fact, a closer scrutiny of the circular shows that the Vigilance Department of the state of Punjab had no such intention. Stop. This circular puts into position a mechanism evolved by the state of Punjab for dealing with the complaints against the government officials which reach the government. Stop. It seeks to avoid harassment which the government servants may face in case unsubstantiated allegations made in complaint were to be acted upon before the authorities set up for the purpose are satisfied about the truth thereof. Stop. There being nothing in the circular which prevent the station house officers of respective police stations from taking cognizance of cases brought to their notices and thereafter proceed to investigate into them. The grouse of the petitioner is unfounded, as we have no doubt that action contemplated and the delay complained of is only regarding an administrative action which the state may like to initiate against the officials on account of misconduct that is alleged to have been committed by them. Stop. The obligation of the police force to our mind to respond promptly where any cognizable offense brought to its notice against any persons, howsoever high, is in no way diluted by the circular. Stop. In this view of the matter, no legal infirmity which would call for any rectification at the hands of this court can be found in the circular, and therefore civil writ petition number 9256 of 2002 has to be dismissed. Stop. Ordered accordingly. Stop. The writ petition is consequently dismissed with no order as to cost. Stop. हाय स्टूडेंट, डिक्टेशन लिखने के बाद उसको टाइप करने का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आपको बताते हैं। जैसे आप इसमें डिक्टेशन लिख लेते हैं तो इस विंडो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाके आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको इस टाइप से विंडो नजर आएगी। इसमें विंडो के राइट साइड पे स्किप टू ट्रांसक्राइब वाली ऑप्शंस आपको नजर आ रही है, इस पे क्लिक करें। क्लिक करते ही आपको लॉगिन वाला विंडो ओपन हो जाएगा। इसमें लॉगिन नहीं करना है, साइन अप करना है। साइन अप पे जैसे क्लिक करेंगे क्रिएट अकाउंट आ जाएगा। क्रिएट अकाउंट में आपने फुल नेम, ईमेल, ईमेल आप अपनी सही ईमेल डालिए, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, उसके बाद क्रिएट अकाउंट कर दीजिए। उसके बाद आपकी ईमेल पर वेरीफाई योर ईमेल उसका लिंक ओपन हो जाएगा। इस पे आप जाके क्लिक करें। क्लिक करते ही तो कंटिन्यू की ऑप्शन आ जाएगी। कंटिन्यू पे आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद लॉगिन वाली ऑप्शंस आती है, इस पे साइन इन करना है आपको। साइन इन करने के बाद ट्रांसक्राइब हियर वाला विंडो ओपन हो जाएगा। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो राइट साइड पे टाइमर है, टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप टाइम से पहले टाइप कर लेते हैं तो नीचे ऑप्शन है सबमिट अटेम्प्ट, उस पर क्लिक करो, अदरवाइज ये ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। सबमिट करने के बाद आपको सबसे पहले एक्यूरेसी, एक्यूरेसी कितनी एक्यूरेसी से आपने टाइप किया, नेक्स्ट
विंडो है, फुल मिस्टेक कितनी मिस्टेक आपने की, हाफ मिस्टेक्स कितनी है, और एरर टोटल कितने हैं और कितने वर्ड आपने टाइप किए। और नीचे आपको ग्रीन में दिखा रहा है, ग्रीन ये जो करेक्ट वर्ड है, रेड वाला जो है आपकी मिस्टेक है। इसके बाद नीचे एरर ब्रेकडाउन वाली ऑप्शंस आती है, इसमें आपको सारा डिक्टेशन के बारे में बता रहा है, ओमिट वर्ड्स, मिसिंग वर्ड्स, एडिट वर्ड्स, सब्स्टिट्यूट वर्ड, ये सब दिखाता है। इसके बाद हमारे पास ऑप्शंस है व्यू लीडर बोर्ड की। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपको डिक्टेशंस योर परफॉर्मेंस की ऑप्शन दिखाता है, आपका कितना रैंक है और एक्यूरेसी कितनी है। ये जितने भी बच्चों ने इसको टाइप किया वो उनमें आपका रैंक डिस्प्ले कर देगा। इसके बाद हमारे पास है व्यू ट्रांसक्रिप्ट पीडीएफ की ऑप्शंस है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको विद शॉर्ट एंड मैटर जो डिक्टेशन का मैटर है वो आपको डिस्प्ले कर देगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपकी जितनी भी आपने डिक्टेशन है इसमें अटेम्प्ट की हैं उसका विद ग्राफ आपको डिस्प्ले करेगा। थैंक यू।